ठीक है तो बेटा वी आर स्टार्टिंग विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू मार्केट फेलियर का लेक्चर जो हमने कवर किया था। सही, दीज आर ऑल द लेटेस्ट पास्ट पेपर क्वेश्चंस, दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस। तो गौर से सुनना और मेरे साथ साथ करना, स्पीड से, स्लो स्पीड नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कर दें स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डिफाइन मार्केट फेलियर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिफाइन सोशल बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिफाइन सोशल कॉस्ट। तो सिंपल 3 टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हमें डिफाइन करनी है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 वाज डिफाइन मार्केट फेलियर। तो क्या करेंगे भाई, मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता था, तो सिंपल डिफाइन कर देंगे। मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट्स when freely functioning market when freely functioning markets fails to allocate resources from society's point of view. That is under or over allocation of resources. That is under and over allocation of resources. Clear है ये चीज? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 से डिफाइन सोशल बेनिफिट। अच्छा, जब भी सोशल बेनिफिट की डेफिनेशन मांगेगा तो आपने प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट दोनों को डिफाइन करना है, बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ। सो ऑल्दो इट इज अ 2 मार्क डेफिनेशन बट स्टिल यू नीड टू राइट। सही है, शॉर्ट डेफिनेशन पे भी मार्क्स मिल जाते हैं पर अपन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। सोशल बेनिफिट इज द टोटल बेनिफिट, social benefit is the total benefit of the society तो ये सोशल बेनिफिट द टोटल बेनिफिट ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ नहीं होगा बल्कि टू द होगा, मैं यही सोच रहा था, टू द सोसाइटी ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही है, ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which comprises of which comprises of private benefit and external benefit। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन हमने दे दी। अब मैं उसको प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट डिफाइन कर दूंगा। प्राइवेट बेनिफिट, सॉरी, प्राइवेट बेनिफिट आर द बेनिफिट्स। अच्छा, प्राइवेट बेनिफिट किसको मिलते थे मैं यही बता दूं? नहीं बेटा, आप क्या हो गया, मना किया था मैंने। अच्छा, प्राइवेट बेनिफिट बेसिकली क्या होता है याद करो, ये उनको मिलता है जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे कंज्यूमर्स का बेनिफिट इज द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड, प्रोड्यूसर का बेनिफिट इज द प्रॉफिट अर्नड, जो वो पैसा कमाता है। सही है, ठीक है। तो ये प्राइवेट बेनिफिट आर द बेनिफिट्स
तो इस तरह करते हैं, प्राइवेट बेनिफिट इज द बेनिफिट which arises from an economic activity from an economic activity. अच्छा, कौन लोग रिसीव करते हैं ये? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स which are received by those consuming or producing which are received by those consuming and producing goods and services. ठीक है? While external benefit are the benefits which are received by the third party, which are received by the third party. एक थर्ड पार्टी कौन होती है? जो ना कंजम्पशन करती है ना प्रोडक्शन करती है, सही है? which arise from an economic activity for which no amount has to be given. आइए, अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वो सोशल कॉस्ट के ऊपर था. social cost is the total cost to the society of an economic activity which arises which comprises of private cost and external cost. मैंने आपसे पहले बोला था, ये वैसे असूलन 2 मार्क में अगर आएगा भी ना, अगर आप इतनी लंबी नहीं भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप सिर्फ सोशल बेनिफिट को डिफाइन करके एक्सटर्नल में खाली ये लिख दो, थर्ड पार्टी और प्राइवेट में खाली ये लिख दो ना कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिसीव करते हैं, बस तो मार्क्स आपको दे देगा. तो मैं तो आपको परफेक्शन की तरफ ले जा रहा हूँ कि पेपर में अगर आपके पास टाइम हो तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना उसको. सही है? क्लास में जो हम चीज कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ही करेंगे. पेपर में थोड़ी बहुत आप डंडी मार भी दोगे ना, फर्क नहीं पड़ना. समझ रहे हो बात? वो फिर अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करना आप. प्राइवेट कॉस्ट is a cost which arises from an economic activity which are borne
बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। विच आर बॉन्ड बाय दोज कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज while external cost are the cost to the third party these are harmful effects which arises from an economic activity for which no appropriate compensation is to be made. सही है। ये वाला पार्ट लिख लिया सबने? तो मुझे बताओ, ये वाला पार्ट हो गया जो मैंने सर्कल किया हुआ है? जल्दी से बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कह रहा है एक्सप्लेन प्राइवेट गुड एंड इट्स फीचर्स। 5 में कह रहा है एक्सप्लेन पब्लिक गुड एंड इट्स फीचर्स। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि थोड़ी टेढ़ी इंग्लिश में पेपर में पूछेगा, पर रिक्वायरमेंट यही होगी। तो जब हम ईयरली देख रहे होंगे तो वो भी आपको कैटेगरी दिख जाएगी। बड़ा बच्चों वाला सवाल है। पहले सवाल में बोला है प्राइवेट गुड को डिफाइन करो और उसके फीचर बता दो। पहली बात, प्राइवेट गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है। सही है, प्राइवेट और पब्लिक गुड की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इनकी फीचर्स ही इनकी डेफिनेशन है। समझ रहे हो बात? तो आंसर फॉर जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप स्टार्ट में ये चीज लिख दोगे। लिखो प्राइवेट गुड आर दोज गुड्स, प्राइवेट गुड आर दोज गुड्स which have the features of which have the features of rivalry, सिंपल लगता है, which have the features of rival
एक्सक्लूडेबल एंड रिजेक्टेबल। सिंपल 3 फीचर है, सबको डिफाइन कर दो। कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले राइफल बता दो। राइवल रेफर्स टू where consumption where consumption by one person reduces the availability of the goods or services for others. For example, a piece of cake. सबसे बच्चों वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस एग्जांपल से मैंने आपको फीचर्स भी समझाए थे। While excludable refers to where it is possible to stop someone where it is possible to stop someone from consuming a good और सर्विस। अच्छा, अब नॉर्मली जब आपको किसी को किसी भी चीज की कंजम्पशन से एक्सक्लूड करना होता है ना, तो आप सेलिंग प्राइस रख देते हो, वरना और भी तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फ्री एजुकेशन भी एक्सक्लूडेबल है। फ्री एजुकेशन क्यों एक्सक्लूडेबल है? आप भाई कोई रिक्वायरमेंट रख दोगे भाई, सर्टेन क्राइटेरिया होगा, सर्टेन एज होगी, एडमिशन टेस्ट रख दिया, ऐसी चीजों से भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। दिस इज नॉर्मली डन थ्रू प्राइस, मैं ये लिख रहा हूँ, दिस इज नॉर्मली बट इट इज नॉट नेसेसरी, यू शुड नो दिस। दिस इज नॉर्मली, तभी मैंने नॉर्मली लिखा है, तो आपको ये चीज पता होगा, जरूरी नहीं है। दिस इज नॉर्मली डन थ्रू this is normally done through charging a price as this payment by one individual restricts another individual from enjoying the benefit of that particular good। एक्सक्लूसिविटी आ जाती है। और आखिरी फीचर क्या है? लास्टली रिजेक्टेबल। every good normally every good which have a selling price which has a selling price, again this is not necessary, huh? Which has a selling price attached to it attached to it
can be rejected by simply not paying for it. अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी. अगर किसी चीज में सेलिंग प्राइस नहीं है उसको भी आप रिजेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है. सही है. तो ये पर्टिकुलर गुड तक हो जाए तो मुझे बताओ जल्दी से. डन. अच्छा, इसके बाद वाला जो सवाल है ना, कॉन्सेंट क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो पब्लिक गुड के बारे में पूछ रहा है, सेम चीज. सही है. कॉन्सेंट नंबर 5, तो पब्लिक गुड वो गुड है जिसमें 3 फीचर्स होते हैं. खत्म. पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स public good are those goods which have the features of non-rivalry, non-rival, non-excludable, and non-rejectable. तो एक एक करके डिफाइन कर देंगे सबको. Non-rival means that consumption by one individual does not reduce the consumption for others. For example, street lights. ठीक है. उसके बाद while non excludable means that payment by one individual cannot restrict the other individual
to enjoy from enjoying the benefits of that work. For example, street lights, even the non-taxpayers, even the non-taxpayers even the non-taxpayers get to consume. Lastly, non-rejectable means that you cannot reject a public good. One way or the other, one way or the other, you will consume it. Have to consume these goods. सही है कोई सवाल यहाँ तक